तो वो आपस में बातचीत करें, एक कॉमरेडरी डेवलप करें। हमारे इससे पहले फॉर एग्जांपल एसएचओज़ की बात करें, 5th एडिशन है। पीछे 4 एडिशंस में जितने एसएचओज़ कॉन्फ्रेंस हुए हैं उनके ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स आज भी ज़िंदा है, और उनकी जो दोस्ती उस समय हो गई थी वो आज उनको काम आती है इंटरस्टेट किसी ऑपरेशंस में, या फिर कोई भी साइबर क्राइम होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग एक दूसरे से उसी ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो वो कम्युनिकेट करते हैं और अपनी डे टू डे की जो ज़रूरतें होती हैं या कोई डाउट्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, लोग पूछताछ उस पर करते रहते हैं, लोग एक दूसरे से संपर्क में बने रहते हैं। तो हमारी आपसे यही अपेक्षा रहेगी कि जब तक आप यहाँ हैं, अपने साथियों के, अपने आसपास के स्टेट्स के जितने अधिकारी आए हुए हैं, आप आपस में बातचीत करें, एक कॉमरेडरी डेवलप करें, सो दैट कि ये लॉन्ग टर्म में आपके काम आए। तो इस चीज़ की मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप ध्यान रखेंगे। यही बस एक छोटी सी जानकारी थी जो मैं आपको देना चाह रहा था। थैंक यू मच। इसके अलावा भी यदि आपको आपके हॉस्टल के अंदर कोई भी समस्या होती है तो ग्रुप पे यदि आप जुड़े हुए तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे हवलदार हमारा होता है उससे शेयर कर सकते हैं। यदि किसी को कैंपस में घूमने के लिए साइकिल की आवश्यकता है तो साइकिल भी हमारे पास अवेलेबल है फॉर ट्रेनीज़, तो कैंपस में घूमने के लिए आप साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई समस्या हो किसी भी प्रकार की, आप बेफिक्री से बेधड़क होकर कहिए, वी विल ट्राई, हमारे बस में जितना होगा वी विल ट्राई टू कैप्ट यू।
शेफाली मैम, आप आगे आएँ, बोथ ऑफ यू प्लीज़ कम हियर, बॉस इज़ ऑन द वे, इज़ कमिंग, 5 मिनट और लगेगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ सीक्वेंस। सबसे पहले जब डायरेक्टर सर आएंगे तो आप सब लोग खड़े हो जाइएगा, एक बार सभी लोग अपनी कैप लगा लेंगे और मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। फिर मेरा वेलकम एड्रेस, उसके बाद डायरेक्टर सर का ओपनिंग एड्रेस, उसके बाद नेशनल एंथम, हम सब लोग खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर नेशनल एंथम के लिए। उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होगा बीके शर्मा सर का। वोट ऑफ थैंक्स के बाद पीछे वाले गेट से आप सब लोग फाउंटेन के सामने असेंबल हो जाएंगे ग्रुप फोटोग्राफ्स के लिए। वहाँ पर आप अपनी हाइट के हिसाब से खड़े हो जाइएगा, जो बड़े हैं वो पीछे वाली लाइन पे, मैडम लोग और जो थोड़ा शॉर्ट हाइटेड हैं वो आगे वाली लाइन पे, ठीक है। उसके बाद ग्रुप फ़ोटो होगा। ग्रुप फ़ोटो के बाद आप सब लोग इस तरफ लॉन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपका हाई टी का अरेंजमेंट है, टी विथ स्नैक्स। हाई टी के बाद में वी विल सिट इन अ सिंडिकेट। सिंडिकेट का लिस्ट आपको ग्रुप में हमने शेयर कर दिया है। वी हैव डिवाइडेड द होल बैच ऑफ दिस 100 SHOs इन 4 सिंडिकेट। तो आपको अपने नाम देख लिया आपने अपनी लिस्ट में, सिंडिकेट 1 2 3 4। आप सबको पता है आप कौन से सिंडिकेट में हैं? पक्का? आप कौन से सिंडिकेट में हैं? बहुत बढ़िया, सिंडिकेट नंबर 3। और रूम? अच्छा, आप ग्रुप में नहीं हैं। तो कोई है आपकी जान पहचान का जो ग्रुप में है? वो बगल वाले के मोबाइल में देखिए आपका नाम कहाँ पर है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में है उनके बगल में देखिए, वो लिस्ट में आपको दिखा देंगे आप कौन से ग्रुप में हैं। मैंने पहले ही बताया था, रूम नंबर 31 32 इस तरफ है, रूम नंबर 34 30 33 एंड 34 इस तरफ है। क्लियर? 25-25 के ग्रुप में हम वहाँ पर बैठेंगे और आज दिन भर हमारा सिंडिकेट डिस्कशन होगा ऑन 4 टॉपिक्स। शुरू के जो 4 टॉपिक हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा। Remaining 2 topics will be discussed tomorrow in the morning, and after lunch session there will be presentation by the leader you have selected to present one topic. We have selected 6 topics, तो हमें 6 लीडर्स की ज़रूरत होगी जो कि यूनोनिमसली सबकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन यहाँ पर देंगे। उसको सुनने के लिए बॉस बैठे होंगे, अगर इसके अलावा और कोई सीनियर ऑफिसर आता है तो वो होंगे, और उन्हीं सब को हम एज अ रिकमेंडेशन फॉरवर्ड करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, आपके स्टेट के DGPs को और जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ के DGs को। वो जो आप फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे, जो रिकमेंडेशन देंगे, उसको हम कंपाइल करके विल ट्राई टू इंश्योर दैट रीचेज ऑन द राइट ईयर्स, और फिर आगे देखेंगे क्या बदलाव आता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि सिंडिकेट डिस्कशन के दौरान पे यू कम अप विद आइडियाज़, अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, रिलेवेंट हैं जो टॉपिक के, उनको डिस्कस करिए। मॉडरेटर्स आपकी मदद करेंगे उसको लेने के लिए, और इस तरह से हम अपना 2 दिन यहाँ पर बिता देंगे। टाइम का ध्यान रखिएगा, 6 बजे तक हम ख़त्म कर देंगे, जिससे आप एकेडमी की जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल कर पाएँ। वॉक करें, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, गेम खेलें वहाँ पर। वी हैव लाइब्रेरी, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड है दे कैन गो हैव अ बुक। इसके अलावा नेक्स्ट डे जो होगा हमारा, नेक्स्ट मॉर्निंग विल स्टार्ट अर्ली 10 बजे से, और 2 डिस्कशन करने के बाद फिर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन। विल ट्राई कि आपको हम कल शाम को 6 बजे तक यहाँ से फ्री कर दें, जिससे जिनकी फ़्लाइट है 9 बजे 9:30 बजे, दे कैन लीव अर्ली बाय 7, यहाँ से वो चले जाएँ। सब लोग अपना ट्रैवल प्लान शेयर कर दीजिएगा, सबको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जहाँ भी जाना है आप लोगों को उस हिसाब से। तो डू शेयर योर ट्रैवल प्लान इन द व्हाट्सएप ग्रुप। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो आपकी तो पूछें। फ्रेंड फ्रॉम Pondicherry, getting something? Nothing?
और कौन है जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं समझ में आती? अगर इसका किसी ने जवाब दे दिया तो वो नहीं माना जाएगा। Anyone who is not comfortable in हिंदी, जिनको मेरा हिंदी निकल जाता है। U3 ना, 4, 5 हो गया, numbers are rising। ठीक है, we'll try to keep a medium of our discussion and this presentation bilingual, Hindi and English. The slides will be shown in English and the elaboration will be mixed Hindi and English for understanding of all of us। जैसे मैं MP से हूँ, मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है, मेरे कई भाई होंगे जो छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी हैं, जिनको थोड़ी तकलीफ़ होगी थ्रू आउट इंग्लिश में, तो सबकी अच्छी समझ के लिए हम उसको बाइलिंगुअल रखेंगे। क्लियर? नॉर्थ ईस्ट से हाँ, परफेक्ट, सारे एक साथ बैठे हुए हैं, हम आपको सिंडिकेट में अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे ग्रुप बना के बैठे हैं। एंड ट्राई टू यूज़ दिस टाइम टू नेटवर्क विद अदर काउंटर पार्ट ऑफ योर अदर स्टेट्स। आपकी जो बॉन्डिंग यहाँ बन जाएगी, जो दोस्ती यहाँ हो जाएगी, दैट विल हेल्प। और कॉन्फ्रेंस का जो हमारा अल्टीमेट पर्पज़ है, वन ऑफ दैम इज़ टू क्रिएट अ नेटवर्किंग अमंग्स यू। आप लोग जब अच्छे नेटवर्क में होंगे, क्लोज लाइजन में होंगे, तो कभी ना कभी एक दूसरे की मदद में हम आ सकते हैं, एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, यू कीप दैट ग्रुप अलाइव। और ज़रूरी नहीं उसमें गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज या फालतू पॉलिटिकल व्यूज़ शेयर करें। उसमें आप जब भी कोई किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, इंटर स्टेट क्राइम को लेकर के या और किसी पॉलिसी को लेकर के डिस्कस करना है, तो आप उस ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी विल कीप दैट ग्रुप अलाइव। और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था इन ईयर 2018, उसके बाद सेकेंड कॉन्फ्रेंस हुआ 19 में, उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी लाइव हैं और उसमें भी आपके जैसे लगभग 100-110 पार्टिसिपेंट्स हैं। दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर। इसी तरह से और भी जो हम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, चाहे वो यंग DSPs की हो, चाहे ट्रेनिंग हेड्स की हो, सारे ग्रुप्स हमने बना रखे हैं। दे हैव अ गुड नेटवर्क देयर, तो इट्स गुड पार्ट। और आप लोग अगर उसमें, आप में से कुछ लोगों को हम एडमिन उसमें बना देंगे, और हर स्टेट का विल ट्राई कि हर स्टेट से एक को हम उसमें एडमिन बना दें। तो आपको अगर अपने स्टेट के SHOs को उसमें ऐड करना है तो यू कैन ऐड, तो ये एक बढ़िया नेटवर्किंग हो जाएगी। शिवानंद, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी? नॉट रिक्वायर्ड। इसके अलावा CAPT का सोशल मीडिया नेटवर्क पे वी हैव अ ट्विटर एंड वी हैव फेसबुक पेज। कल ग्रुप में हमारा कुछ डिस्कशन हो रहा था, कुछ लोगों से मैंने शेयर भी किया था, तो बाकी लोगों से भी आई रिक्वेस्ट कि उसको पेज को फॉलो करें, लाइक करें। एज़ वी आर न्यू एकेडमी, तो हमें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है, तो आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमारे व्यूअर्स बढ़ेंगे और हम इंडिया के मैप में थोड़ा और अच्छे तरीके से आ पाएंगे। इस एकेडमी के इस्टेब्लिश होने के तुरंत बाद ही लगभग 2 सालों में डायरेक्टर सर की जो गाइडेंस थी, उनका जो लीडरशिप था, वी हैव अचीव्ड रिमार्केबली इन ऑल द फील्ड ऑफ इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 years वी हैव गॉट द बेस्ट पुलिस इंस्टीट्यूट ट्रॉफी इन द कैटेगरी ऑफ नॉन गजेटेड ऑफिसर्स। और इस साल वी आर होपफुल दैट वी आर गोइंग टू ग्रैब दैट बेस्ट पुलिस इंस्टीट्यूट फॉर गजेटेड कैटेगरी एज वेल। सर्वे हो चुका है, एक टीम आई थी, वो देख के जा चुके हैं। वी आर क्वाइट होपफुल कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में, मैन पावर मेनली,
और सर की लीडरशिप में एक बहुत अच्छी टीम है यहाँ पर जो कि रिमार्केबली काम करती है, जो कि जिसे हाईएस्ट लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से रिकॉग्निशन मिलता है। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ आते हैं, अच्छे फीडबैक शेयर करते हैं, एंड दैट बूस्ट अस टू वर्क मोर enthusiastically in the field. प्लीज़ बैठिए। आप कहाँ से? आप भी वर्दी में नहीं आए हैं? ये मेरे घर के आसपास वाले बिना वर्दी में क्यों आ रहे हैं? चलिए बैठिए। डायरेक्टर सर पूछेंगे तो कोई बढ़िया सा जवाब बता दीजिएगा, मतलब एयरपोर्ट में सामान खो गया। यहाँ जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हम जनरली सीरीज़ में कंडक्ट करते हैं, फॉर्मल्स में कंडक्ट करते हैं। एक एसएचओ ही ऐसा कॉन्फ्रेंस है हमारा जो हम यूनिफॉर्म में कंडक्ट करते हैं, और क्लियरली इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि सब लोग आएँ। बट कई ऑफिसर्स हैं, कई बाबू हैं जो नीचे तक पास नहीं करते हैं। कई आप होंगे ऑफिसर्स जिनको उनके डिपार्टमेंट ने बाद में बताया होगा, पहले हमारी तरफ से फ़ोन आ गया होगा कि आप नॉमिनेटेड हैं, आप आ जाइए। हम उनसे टच में होते हैं डायरेक्ट, आपके एडीजी ट्रेनिंग से, आईजी ट्रेनिंग से। हमारा एक खुद का कॉल सेंटर है जो नॉमिनेशन के लिए दिन भर प्रयास करता रहता है। तो हमें कोई पहचानता तो है नहीं, अभी नए नए हैं हम लोग, तो वी कीप ऑन पोकिंग टू एडीजी, आईजी ट्रेनिंग, डीआईजी कि भेजो 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 भेजो। इसलिए आप लोगों को बाद में पता चलता है, हमें पहले पता चल जाता है कि ये सज्जन आने वाले हैं। कई कई जगह पे ये गर्मी वाली शर्ट बदल गई है, कई जगह नॉर्मल है। 15 मार्च झारखंड में, बाकी में भी। हिमाचल में तो परमानेंट ऐसा होना चाहिए। हिमाचल पुलिस, आप लोग ठंडी नहीं लगती वहाँ? अच्छा, उतना ही है। उतना ही है। आपके यहाँ एडीजी विजिलेंस हैं सतवंत अटवाल, जानते हैं? शी हैज़ बीन माई बॉस फॉर 3 years। वो बीएसएफ में जब थी इंटेलिजेंस में, तो आई वर्कड अंडर हर इंटेलिजेंस में। बहुत ही बढ़िया लेडी है। हमारे पास जब आई थी तब उनके बाल काले थे, अभी गई हैं तो सारे सफ़ेद लेके गई हैं। परेशान हो गई वो बीएसएफ। इरफान, आर यू देयर? ये लाइट ठीक आ रहा है चेहरे पे? फ़ोटो बहुत अजीब आते हैं। हम काले काले लोग भी गुलाबी गुलाबी दिखते हैं। वॉइस क्लियर है? और एकदम आंखों पे पड़ता है ये। आरपीएफ से कौन कौन है? एक बार हाथ खड़ा करें।
1 2 3 4 5 6, हमें 7 नाम मिले थे। हाँ अच्छा, हमारे पास एक आपका लखनऊ रेंज से आया है, 6 लोगों का नाम था। एक आरपीएफ हुगली से हमें नाम मिला था, वेस्ट बंगाल से, वो नहीं आए हैं शायद। हमें आईजी का लेटर आया था। बॉस का क्या अपडेट है? ऑन द वे। नंबर 1 गेट से इन। बॉस आ चुके हैं कैंपस में, 1 मिनट के अंदर वो आ जाएंगे हमारे पास। So I request you all to kindly turn off your mobile, put on your cap and place your folder side by. आपको खड़े होने में दिक्कत नहीं होगी। महेंद्र साहब कहाँ बैठे हैं? महेंद्र सिंह साहब एमपी से बैठे। ये पीछे आप जो 2 लोग अलग से बैठे हुए हैं, आगे आ जाइए। इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर खाली है। हरियाणा से वीरेंद्र सिंह साहब आए हैं क्या यहाँ पर? वीरेंद्र साहब मेस में ही हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। लगा दो। कौन से रूम में लगा रहे हो?
क्या पोजीशन है, कहाँ पर है?
नहीं आ रहा सर. हाँ. Gentlemen, put on your cap and get up, please. Yeah. Please be seated. Very good morning to all. We are blessed to have Shri Pawan Srivastav, IPS Director CAPT, as the chief guest for the opening ceremony of the 5th National SHO Conference. Thank you, sir, for convening this idea of having the SHO conference. And we also have Shri Brij Kishore Sharma, Assistant Director Legal, State, Shri Moolchand, Assistant Director Admin, and Shri Amit Atut, AD Training on the stage, sharing with the director, sir. Gentlemen, this conference, CAPT has been organizing this National SHO Conference since the year 2018, and this conference, we provide a platform for the officers of the station in charge level to interact with their counterpart of other states and union territories. Before we start with the inaugural address of the director, sir, please allow me to give you a brief about this conference. Sir, we have received over 100 nominations from all across the country with remarkable representation from all the union territories. Out of 110 nominations, 96 are here present physically. One participant who was physically not well is in the mess. And we have received 7 officers from the RPF for the first time in this SHO conference. And we have received nomination from Assam, Himachal, Andhra, UP, Lakshadweep, Pondicherry, Ladakh, Chhattisgarh, Odisha, Andaman, Dadar Nagar Haveli, Delhi, Jharkhand, Rajasthan, Telangana, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Punjab, Uttarakhand, Bihar, Gujarat, J&K, Kerala and Haryana. We have associated Shri KB Sharma, IPS retired DIG, as the head of the panel, and we are having company of Madam Sophia, Madam Shafali, Mahinder Singh and Manish Raj as moderator who will guide the participant. And the participant would be divided in 4 subgroups, syndicates, and each syndicate has to discuss the issue related to the subject. A panel of experts will present their insight, followed by an open house discussion and question-answer session to brainstorm the ideas. We will keep you posted about the highlights of the conference, sir, as we move ahead with the proceedings. Before I invite Shri Pawan Srivastav, Director CAPT, for the inaugural address, please allow me to share a brief introduction of the sir. Ladies and gentlemen, Shri Pawan Srivastav, IPS Director CAPT, joined IPS in the year 1992 and was born in the cadre of Madhya Pradesh. Is a very highly decorative officer, recipient of President of Police Medal for Distinguished Service, Meritorious Service, and United Nation Medal for service as peacekeeping officer in Kosovo. Sir has been appointed to various important and key assignments in the state. The prominent sir has created and led the anti-terrorist squad in Madhya Pradesh in the year 2008. And as Additional Director General, he joined the BPR&D and was posted as Director of CAPT in the year 2017. Sir has been awarded the prestigious Home Minister's Medal for his extraordinary contribution to the field of police training. And we are pleased to have such a dynamic leader with us as the head of this institute. Thank you, sir, for giving us the finest taste of leadership. Now I would request you to please deliver the inaugural address and encourage the participant with your words. Thank you, sir. Over to you.
Thank you, Suren. Good morning, everyone. बस इतना ही जोश है हाँ ये होना चाहिए Thank you. I regret for the little delay that has been caused this morning. We'll try to compensate it by extending whatever the daily deliberations are well past 6 in the evening. ठीक है मंजूर है Okay, wonderful. How many people from Tamil Nadu? कितना हिंदी आता है इल्ला Puducherry and Tamil Nadu illa total illa oh very bad this is the dilemma that we have been facing for the past टोपी उतार सकते हो आप लोग you take off this is a little dilemma that we have been facing for the ever since the inception, and we realized that a mix of Hindi and English is good. Like you people just cannot understand Hindi, there are many people who just cannot understand any English. For example, the state of Madhya Pradesh, from where I not hail, but on the cadre on which I am born on, we have difficulties in understanding English. So whatever letter comes to the SP office in English, and after you have seen and signed for processing, it returns back to you after 4 months in the same condition. So that is why we have to have a mix of Hindi and English here. Everyone here is otherwise comfortable in English? वैसे भी मैं बहुत क्लिष्ट अंग्रेजी बोलता ही नहीं हूँ. So not very difficult. So I take this opportunity to welcome you here in this academy. This academy was created by the Union Cabinet to train the directly recruited Deputy SPs of the states. So unfortunately, not for you. But then we realized that when a consensus on creation of this academy was given, and when the Union Cabinet agreed and sanctioned this academy, and the time taken by various government departments to create this academy was a longish one, and meanwhile almost all states created their own academies, and therefore there is a kind of reluctance in sending their officials, the deputy SPs, for the full 9-month basic course. So what we have designed now is about 1 month and 3-month courses for the deputy SPs, and we give them certain modules which are I feel are required. For example, on soft skills, on forensic sciences and forensic medicine and cybercrime is what we focus on. And we have also thought of and have already communicated to the various states about an induction course for the inspectors like you to the Deputy SP cadre. So from being supervised, you become supervisory officers on your promotion as a Deputy SP. So how to conduct yourself, how to go about it, what is required for you to be to learn to act as a supervisory officer. This has been communicated, but as all good things require a lot of struggle, we are still struggling for an induction course to happen here. But nonetheless, if you visit our website, you will realize that there is a plethora of different types of courses that we are offering, starting from soft skills to traffic to cybercrime, and we also train the judicial officials, the jail officials, and the prosecution officials. In fact, almost all pillars of the criminal justice administration are being addressed here in this academy. So it is always, a great learning experience when people come here, and it is all the more greater because not only what we are telling you, but because of the interaction amongst you all, and also what you experience here as an officer in the academy. So there is a lot of
learning takeaways from the academy, not only insofar as the classroom training is concerned, but otherwise also. So coming to the topic, which is very pertinent, we have had this, this is the 5th iteration? Okay. So this is the 5th time that we are having this SHO's conference, and on previous occasions, we had many things that we had discussed. Now, as a very senior police officer, I understand the responsibilities that are that you shoulder as a station house officer. But what is more interesting is that no one in the hierarchy is ever satisfied with you, whether it is their seniors, whether it is the court, whether it is the journalist, or whether it is the people to whom we service. मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? मतलब पत्नी, family, बच्चे, no one is happy with us. Why? Despite shedding so much of sweat since morning, getting our blood pressures from 120 by 80 to 160 by 220 all through the course of the day, from a pulse of 60 early morning to about 150 in midday or maybe evening. We don't eat at times. At times we don't even get lunch. So we are struggling so much. We are trying to do so much, yet no one is happy with us. No one is satisfied with us. That is the moot question. So I am trying to find out the reason why people are unhappy with us. I mean, why everyone is unhappy with us. And what should we do to make them happy? I am trying to find out an answer to this major issue that that plagues us. We speak about image. I don't know how and what kind of an image are we carrying, but what is very, very interesting is, very, very interesting, that you are at the cutting edge, and the people whom you supervise, officers till the rank of constables, they are at the cutting edge. So whenever we interact with people in social circles, they are always very, they always praise you. They always have very good impression about you. But they will always complain about the officials who are subordinate to you. So similarly, when we move in social circle, it is what they tell us also. साहब आप लोग तो बहुत अच्छे हो. नीचे वाले subordinates, oh, I went there. No, not they. Most of the time, they will not say that or prove their point with certain evidence. It is only on hearsay that they say कि ऐसा हो रहा है. This is what is happening. So, I personally feel that people who make or mar our images are the ones who usually do not come in contact with us. And if they come in contact with us, they are happy with us, but they are unhappy with the people down below. So when I started my career during training, I was like you. I was an SHO for 3 months in one police station. So I vividly recall that my second day in the police station, and in comes a person with a head injury. He had a quarrel in his village, and someone had beaten him with a lathi, and he had a not a broken skull, but he had a broken scalp, and blood was oozing out. And like whatever I was trained in my academy, in the National Police Academy, मैं अंदर से गया, फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर के आया. मैंने उसका वुंड साफ किया और मैंने उसको पट्टी लगाई. Fortunately, there was no havaldar
or ASI or sub inspector in the police station, so I could do whatever I wanted to. तो मैंने उसको लगा लुगू करके then I sent him for the medical examination. So Pat comes a telephone call from the doctor at the PSC. Sir, ये तो मैं नहीं कर सकता. I can't do a medical examination of this man. I said, why? So he says, sir, he has already been examined by someone and he has already been given some first aid. So I don't know. I cannot make. The person who has intervened first has to write down the MLC. So, as because it was my second day and I had not seen blood like this earlier, so as a good Samaritan, I bandaged him, and I realized over the next about a month or so that in such cases I don't have to do anything. But then as a human I felt that no, he requires certain medical attention. फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि साहब इतनी चोट से मरता नहीं आदमी. मैंने कहा आई एम नॉट एक्सपीरियंस्ड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट इतनी चोट से मरेगा कि नहीं मरेगा, सिर से खून निकल रहा है. तो एनीवे, सो eventually what happens, this is my own very personal thought, is eventually what happens is, it is with us, it is with doctors, it is with everyone. What you see every day is important for you. What you see someday is important for you on the first day of, coming across that information. On the second day perhaps. But on the fourth day, fifth day, seventh day, after 1 month, if the same thing returns back to you, you become immune to it. Like if all of you will remember 1989, when the Kashmiri Pandits were forced to leave the valley. Every day, newspaper mein, front page. You remember? Now? I mean, within the same month, that news went inside the newspapers, and from 4 columns, 6 columns, it eventually reduced to 1 column only, because it was routinely happening. So perhaps one of the malice that we are facing is that we are facing this kind of situation, whether they are public order situations, whether they are crime, we are seeing it almost on a daily basis, and therefore our sensitivity dwindles, खत्म हो जाती है हमारी sensitivity. How to address that? करेंगे. तो एक बार now to understand how to go about whatever we have congregated here for, I must tell you that there is, I tried to find out what is the ranking of Indian police vis-a-vis the other police forces in the various countries. So this was a ranking which was done by the World Internal Security and Police Index, done by the United Nations, and out of 127 countries, any guesses where did we stand? This was done in 2019. Any guesses where do we stand in the ranking in 127 countries? कोई guess? हाँ? तो guess करो कोई भी? Under 80 और 100? अरे 127 में 150 कैसे आएंगे? मतलब Under 50 और कोई? 100. Add 1 to that. So we stand 101. ठीक है. और there were many indicators on which it was ranked, but the point is that if the United Nations says that we are not so good as compared to others, what does that mean? So now we must discuss what plagues us, है ना?
हमें परेशान क्या चीज़ें करती हैं? Why are people, why is everyone dissatisfied with us, especially people? So, and how our image is made. So, most of you would have, watched Sholay and Diwar and movies like that. देखा है ना सबने? शोले में क्या होता है? ठीक है, गब्बर वर्सेस ठाकुर, है ना? पर अब ठाकुर के तो कट चुके हैं हाथ, रिटायर भी हो चुका है, वो गांव आ गया है. So eventually we realize that in the end, both Jay and Veeru have been fighting against Gabbar, and Gabbar was kind of apprehended, and Thakur came and smashed his face with his spiked shoes. And whatever Thakur had done in the train, you recall that? Eventually, when Jay and Veeru and Thakur have done everything, then the blue jeep of police comes with the siren on. If you watch movies of 70s and 80s and early 90s, you will realize that none of us were Singhams. None of us. And the role of police was only, except for a couple of movies, the role of the police was only after the hero has done everything to arrive on the spot. One villain and 18 police officials with the 303s. Recall? Also recall, in our everyday social lives, when a child does not drink milk. So in Sholay, Gabbar says, माँ कहती है बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा. But in everyday life, माँ कहती है बेटा दूध पी ले नहीं तो पुलिस आ जाएगी. होता है ना, ऐसे ही होता है. So just for nothing, because we are the upholders of law and because we have certain powers vested to us by law, the mother tells the child that if you do not agree to what I am asking you to do, police will come and apprehend you. ये मेरे साथ हुआ है, मेरे बड़े बेटे के साथ हुआ है. उसको किसी ने बोल दिया, शायद कोई ऑर्डली होगा, उसने बोल दिया कि बेटा दूध पी लो नहीं तो पापा हथकड़ी लगा देंगे. And I mean, I have been wearing uniform all through, and my child, he has been seeing me in uniform and he starts crying कि अरे पापा कंकड़ी लगा देंगे. हथकड़ी नहीं बोल पाता था, पापा कंकड़ी लगा देंगे. So just imagine the kind of psyche that we are creating in the children, that we are bad. We refrain you from doing things. And दूध पीना किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है. So we are asking him to do something which he doesn't like, because if you don't do that, police वाले आ जाएंगे. So what eventually happens is that the psyche that a child grows up with is that if there is anyone who is a villain in my life, it is a police wala. But rhetoric के अलावा भी जो बात करनी है वो हम लोगों को जो बहुत ज़रूरी बात है, और मुझे शायद आगे मौका मिलेगा नहीं ये बोलने का, लेकिन all of us, if we are at the station house, we command people ranging from about the strength which ranges from about 20-25 to about 200-250. किसी भी पुलिस स्टेशन में 500 लोग नहीं होते हैं क्या कहीं? और किसी भी पुलिस स्टेशन में 5 आदमी भी नहीं होते हैं. The sanction strength ranges from about 20 to about 200-250. But we as station house officers do not know our personnel. Am I right or wrong? Right or wrong? So we do not interact with our team for whatever reason. So what happens when you do not actually interact with your team, there is no obligation on the subordinate to comply with you.
हिंदी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं निष्ठा. So in the whole hierarchy, you realize that about maybe 40 years back, 50 years back, there was something called nishtha. निष्ठा को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? हाँ? लॉयल्टी. लॉयल्टी. आप खुद भी जहाँ पे हो वहाँ पे देख लो कि आपके अपने डिप्टी एसपी, आपके अपने एडिशनल एसपी, आपकी उनके प्रति कितनी निष्ठा है और आपकी दूसरों के प्रति कितनी निष्ठा है. अपने यहाँ पे हाथ रख करके आप इस बारे में विचार कर लो. मैं नहीं बोल रहा. The only thing that I'm trying to tell you is that the loyalty that should be towards the department is wanting. नहीं है. Corruption is a major issue. And corruption, when you decide that whenever we are on the roads, I will ensure that my man does not take any money. We can ensure that. We can very well ensure that. What you do in the police station, what you do in the cases, I'm not saying anything. But our images are marred and made by how we behave on the roads. What we do and how we behave in the police station is a different matter altogether. But how we behave, because it is not a transaction between a uniformed person and a victim, I will say, because he is not carrying his driving license with him. It is not a transaction between the two of them only. It is a transaction which is witnessed by everyone around. What happens in the police station, I'm not saying that हमको करना ही चाहिए ये, लेकिन what happens in the police station remains in the police station in the sense that there is only this man who goes and किया, मैंने लिफाफा दिया, मेरा काम हो गया. But what happens on the road is being witnessed by a lot many people. The first thing I don't say, and you will realize that if we compare ourselves to the other governmental departments, the kind of money that we get is actually peanuts. वो रोड का ठेका हुआ, उसमें इसको इतना चला गया परसेंट, उसको उतना चला गया, उसको उतना चला गया. एंड अगर हम पूरी शक्ति के साथ सिर्फ भ्रष्टाचार करते रहते हैं तो पर भी एक रोड कॉन्ट्रैक्ट में जितना पैसा एक अपने काउंटर पार्ट को मिलता है, वो पूरे थाने में अगर हम एक्सटॉर्शन करते रहेंगे तो भी उसके बराबर नहीं होता है. सो we do not compare ourselves to the various other departments. Everywhere it is pandemic, but we can at least to start with ensure that when we interact with people on the roads, we will ensure that we are corruptionless. Maybe that would be one point from which our image starts improving. The second part is training. People usually do not want to go on training for the simple reason that training centers, whether it is a PTS or whether it is a PTC or whether it is a police academy, are centers of tremendous corruption. Why? I do not know whether you have gone through this or not, but I know for sure that the ustad would give adequate rest to certain person who has done some pecuniary benefit to the ustad. बाकी सबको रगड़ा है, उसको नहीं है. मालूम है नहीं मालूम है? So ever since a constable or a sub-inspector like you who joins the police, the police academy or the police training school or the police training college, he realizes that corruption is a good thing. It gives me rest, gives me peace of mind. So our ethos, when as the foundation, our ethos become that if we pay, we are comfortable. And this ethos continues ever since till the time we are in service. बाहर निकलने के पहले तक नहीं हो. Training. Second, I was saying that people do not want to go on training for this very simple reason that we know all, we have done it, there is no need to train us,
and training centers are centers of corruption, and therefore we will not go for training. मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? हाँ? Anyone can disagree with me. For that very reason, as because you are not trained properly, that is the reason why, you have to, for a GD entry or for an FIR, everything is on CCTNS now, you are dependent upon data entry operators. You have, every one of you have WhatsApp. Yes, no? From you, since a constable till the constable, everyone has a WhatsApp. You don't give your mobile phone to your PA or your reader or XYZ to type certain thing into it. You do it in your own, by your own thumbs. ऐसे ही है ना? And you do it in English and you do it in your vernacular. Then why do you require a data entry operator? And seldom does it happen that whatever are your observations, if you are writing a case diary, if you are writing a bayan, that statement, rarely would it so happen that you have not written that thing down on a piece of paper before. फिर आप वहाँ बैठते हो, उसको dictate कराते हो. ऐसे ही है ना? In the evening, just try to do something. You write one page of anything by your own hand. Count the time that has been taken by you to write that one page. And then pick up your phone and compose a message by typing. If you take 10 minutes to write one page, you will take less than 10 minutes to write on your WhatsApp, even by your thumbs. So just imagine the kind of time that we save if we train properly. And how do we train ourselves properly? By ensuring that जिसकी training लगी हुई है उसको जाना ही जाना है, वो भले आप भी क्यों ना हो. एक चीज़ होती है accountability. आपकी accountability तो बहुत ज़्यादा है. Anything happens in the police station, major law and order situation, the SP conveniently says, oh, you did not handle it right, therefore I suspend you. क्यों महेंद्र, ऐसा ही है ना? So we suspend you. We suspend the sub-inspector. Suspension should not be taken as a punishment, but it is certainly for senior officers, it helps them to diffuse the situation. And most of the time, if you are suspended, most of the time you would be reverted back to the same police station after a couple of days or weeks. You will be placed in, or if not, then maybe in a better police station also, if you are good. So accountability is one thing that we certainly need to focus upon. Another thing is community policing. Community policing में हमारे दिमाग में ये बात आज तक बैठी हुई है. Certain experiments, Pradeep Philip in Tamil Nadu and other experiments also in Madhya Pradesh also they have, और सांझा चूल्हा in Punjab. पंजाब का है कोई? एक कोई? तुसी कितने थे? अच्छा J&K. So there are experiments which have been done, but point is not this that we ask the community to come and we speak to them, and whenever we engage with people in community, which means whenever we are in the police station, whenever we are on our beats, whenever we are on our nakas, the way we communicate with the community, the way we treat them, and the way we address them, that is more than adequate. Whenever we speak about community policing, the Bobby of Metropolitan Police of London is always revered. Why? Because whenever he communicates with anyone who comes to him, he is extremely polite. आप US के पुलिस ऑफिशियल्स को देखो, वो आपको सर करके बात करेंगे, पर हमारे यहाँ क्या होता है? बोलने में अगर हम पोलाइट हैं, हम्बल हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रिक्ट नहीं हैं.
हमारी ज़बान क्या है, the way we communicate to each other is very, very important. And no exercise of calling the community or going to the mohalla and speaking to them and giving lectures would help. No exercise like this is going to help. It is the only thing that is going to help is the way the hierarchy in your police station till the constable communicates with the community in whichever engagement he is having with them. The another thing is resources. So I was speaking that in a police station you will have a sanction strength starting from 20 to 200. But how many times do you have that sanction strength? As it goes, most of the police forces in the states have close to about 10 to 15% of vacancies. Then everyone has to go on leave. Then many of them have to go and summon the, they have to go out to the courts for dark duty, for this and for that. For the actual police station work, how many people you are left with? Maybe less than half the sanction strength that you have. But despite that, you are able to manage the police station. So resources is one thing, and you should know. My thought is you should not take it lightly. That no, whatever is available, we will do it. You have to make a benchmark. कि साहब मेरा पुलिस स्टेशन में 50 आदमी के नीचे मेरा परफॉर्मेंस रिड्यूस होगा. बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते. हाँ, जो है उसी में करो. नहीं. If it is so, you always have the right to dissent. No one has stopped you from dissenting. We will certainly obey to whatever lawful directions have been provided by the seniors. But we must always tell them that these are our limitations. Unless you communicate, unless you tell that what are your limitations, how is he going to think? सीनियर्स तो ये सोचते हैं एसपी होगा, डीसीपी होगा कि आप तो आज निकलोगे अभी और जा कर के आसमान से 4-5 तारे तो तोड़ के ही ले आओगे. ऐसे ही होता है ना. पर आसमान तक जाने के लिए सीढ़ी भी तो होनी चाहिए, लिफ्ट भी तो होनी चाहिए. So I don't say that you have the right to dissent, but you must always communicate this with your seniors. You must tell them that these are our limitations, and under these limitations we are functioning. So with all what I have spoken to you, my point was very, very simple, that we are trying to find out certain answers to these questions. And by syndicate discussions, there would be certain, you would be divided into syndicates, there would be certain topics that would be posed on you. And I would like to have very clear and very heart-to-heart discussion in the syndicates, so that whatever is inside you should come out. And together, it is not us that we are going to do it. This congregation here of close to about 100 SHOs from all over the country is perhaps ranking improves. With those words, thank you so very much. Thank you, sir. Thank you for spending time and enlightening the gathering with words of wisdom and encouragement. Thank you so much. Now, I would like to invite Shri B.K. Sharma, sir, Assistant Director, to offer a vote of thanks. Please. Respected Shri Pawan Srivastav, IPS, Director CAPT, and distinguished Chief Guest of this event, police officers, and other members of the law enforcement community. It is my honor to stand before you today to express my deepest gratitude for your participation in the 5th National SHO Conference.
This gathering marks a significant moment for us to come together to share ideas, best practices, and insight into how we can continue to work toward a safer and more just society. We are incredibly grateful to our for the gracious presence and support of our esteemed chief guest and patron of this academy. Sir, your wise words and guidance have provided us with a renewed sense of purpose and directions, and have set the tone for this what promised to be a fruitful conference. Your unwavering support and encouragement toward this event is greatly appreciated, and we are truly honored by your continued support in conducting this conference. I would like to express my sincere thanks to all the speakers, moderators, and panelists who are present at this platform. It is our belief that your kind expertise and practical knowledge in the field of law enforcement will contribute immensely in churning out the recommendations for the higher echelons for the policy formulation in improving the functionings of police and also serving the society in a better manner. At the end, I would like to thank everyone and look forward to maintaining this academy as a center of excellence in the field of law enforcement. Thank you to all. Thank you, sir. Now I would request you all to please rise up in the honor of National Anthem. Thank you all. Now I request you all participants to please gather in front of the academic block for group photograph, followed by the high tea session in the lawn. Please keep your belongings here and put on your cap and assemble for group photograph. At the front academic block, please. Keep your belongings here. Please assemble for group photograph. And after that, please assemble in the lawn here for high tea.